ज्ञान शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you for joining the class. Today is a very interesting topic and very debatable topic, very disputable topic. Never trust a woman. एक स्त्री होकर इस टॉपिक पे बोलना सोचेंगे कि how can a woman say such topics? Never trust a woman, being herself a woman. But see, we have to study the Shastras scrutinizingly. It's said in the Shastras. It's not said by me. ये मेरे द्वारा नहीं कहा गया है, ये शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए हम पहले इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम पहले देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिखा है, किस किस शास्त्र में इस प्रकार से श्लोक के साथ कहाँ कहाँ इस प्रकार से मेंशन किया है और फिर किस कंटेक्स्ट में ये मेंशन किया है और हमें किस प्रकार से इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ऐसा है तो इसका सोल्यूशन क्या है और हमें किस प्रकार से इसको रेक्टिफाई करना है, राइट? सो वी विल टेक इट एज इन अ पॉजिटिव सेंस, वी विल नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस कि हमारे बारे में कोई खराब बोल रहा है। So this class is not for defaming anybody or to say low of women, but it's just to understand the Shastric statement. That's all. Just to understand what the Shastras really mean if it says never trust a woman. Okay, right? Okay. And at the same time, I gave the topic never trust a woman, understanding women's nature. स्त्रियों का स्वभाव समझना, ठीक है, वो that is interconnected. Can never trust a woman and understanding women's nature. So both are interconnected. So first of all, try to focus on understanding women's nature as said in the Shastras. It's not my concoction या फिर ये मेरा तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, जो भी महाभारत श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में जो बताया गया है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे श्लोकों के रेफरेंस के साथ. Okay. So when we say women's nature, स्वभाव, that's what we say in Hindi, स्वभाव, nature means स्वभाव. So what is the meaning of स्वभाव according to Bhagavad Gita? According to Bhagavad Gita, what is the meaning of स्वभाव? Krishna says in 3rd chapter, 3.33 verse, if you see, 3.33 verse, in that Krishna says a verse to Arjuna. Okay. What Krishna says about Swabhava? Krishna says, Sadrisham cheshtate swashyah prakritir jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. Krishna is saying to Arjuna, when actually Krishna is giving information to Arjuna in the 3rd chapter. 3rd chapter is Karma Yoga. Okay? Krishna is telling Arjuna how you have to do your prescribed duties and why you have to do it. He's explaining that. But
अर्जुना नाउ सेइंग, मतलब नाउ ही इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा ऐसा सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। पर एट द सेम टाइम अर्जुना हैज दैट डाउट इन द माइंड कि भाई ये सब जानने के बाद भी, इतना सब कुछ आपने बताया कर्म के बारे में, और कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, ठीक है, पर एट द सेम टाइम अर्जुना इज टेलिंग हिज डाउट टू कृष्णा कि भाई इतना सब कुछ जानने के बाद भी कोई ऐसी चीज है जो मैं, फिर भी मैं पाप करने पे आवृत हो जाता हूँ, मैं पाप करने के लिए कंपेल हो जाता हूँ, पाप करने के लिए मुझे फोर्स कर रहा है कोई, ऐसा लगता है मुझे। सब कुछ सही पता होने के बाद भी मैं सही नहीं कर पाता, गलत कर बैठता हूँ। तो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है कृष्णा, ठीक है। तब कृष्णा इज सेइंग दिस वर्ड्स, व्हाट इज कृष्णा सेइंग, सदृशिम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृतिम, when krishna is using the word prakritim, that means swabhava. By prakritim word, krishna means swabhava. Prabhupada translates prakritim, when krishna says prakritim here, that means swabhava. What is krishna saying here? Krishna is saying to Arjuna कि भाई even a man of knowledge acts according to his own nature. कितना भी ज्ञानवान व्यक्ति हो, फिर भी वो अपने स्वभाव के साथ काम करता है। फॉर एवरीवन फॉलोज द नेचर ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स, व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश, दिस इज द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। तो यहां पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि भाई एक ज्ञानी व्यक्ति भी होगा ना, वो भी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली काम करता है। स्वभाव इतना जिद्दी है, हमारे अंदर इतना जिद्दी तरह से बैठा है कि वो हमारे कितने भी ज्ञान को भी खींच के लेकर चला जाता है, राइट। एंड स्वभाव होता क्या है, स्वभाव बनता कैसे है? जैसे हम देखते हैं ना कि कई व्यक्ति, सम पीपल आर शॉर्ट टेम्पर्ड, सम पीपल आर बाय नेचर काम एंड कूल, राइट। स्वभाव इज डिफरेंट ना, इवन इन लेडीज, अमंग मेन ऑल्सो वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, इनबिल्ट नेचर, दैट्स इनबिल्ट नेचर। कई लोग स्वभाव से स्पाइसी पसंद करते हैं, कई लोग स्वीट पसंद करते हैं, राइट। राइट, तो ऐसे अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। एक परिवार में भी अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत गुस्से वाले, कोई शांत, कोई एडजस्टेबल होते हैं, कोई एडजस्टेबल नहीं होते हैं। दैट्स द नेचर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑन हाउ द नेचर, दिस इज द नेचर, राइट, वी आर सीइंग द नेचर। हमारा भी कुछ नेचर है, मुझे भी कुछ नेचर है, आपका कुछ नेचर है, सबका नेचर अलग अलग है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि फॉर एवरीवन फॉलोज द नेचर ही इज एक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स। भगवान बता रहे कि स्वभाव बना कैसे। पहले तो भगवान बोले कि भाई कितना भी ज्ञानवान व्यक्ति हो, वो अपने स्वभाव से खिंचा चला जाता है, ठीक है। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में भगवान बोल रहे हैं कि ये स्वभाव बना कैसे, ही इज एक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स। दैट मीन्स एक व्यक्ति का स्वभाव एक जन्म में नहीं बनता, करोड़ों करोड़ों जन्मों से वो जिस गुणों से, के गुणों से क्या बोलते हैं, डील करता है, जितने ज्यादा, जो जैसे सत्व रजस तमस तीन गुण होते हैं, वो जितने ज्यादा जिस गुणों के संपर्क में रहता है उसका वो स्वभाव बनता जाता है, जनता जाता है। स्वभाव इज लाइक अ, इट्स लाइक अ कंडेंस्ड स्वीट, लाइक जैसे कंडेंस्ड मिल्क, जैसे मिल्क को गाढ़ा करें गाढ़ा करें गाढ़ा करें तो क्या हो जाता है, कंडेंस्ड मिल्क बन जाता है ना। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का स्वभाव एक जन्म में नहीं बनता, कंटिन्यूअस एसोसिएशन विद द थ्री मोड्स ऑफ नेचर एक व्यक्ति का स्वभाव बनता है। इसीलिए स्वभाव को बदलना बहुत बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट इजी, इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर मेनी years, it's very difficult to change the nature of a person. Am I right? Those who are in Krishna consciousness for so many years, they can just tell it's very difficult to change the nature of a person despite practicing, despite chanting, despite serving, despite following all the regulative principles. Nature is very difficult to change. Why? Because it's not a one lifetime. We have acquired from millions of lifetimes. मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स में जितने जैसे हमने मोड्स को एक्वायर किया है, मोड्स के साथ एसोसिएट किया है, वैसा हमारा स्वभाव बनता गया है। और नाउ वी हैव अ पर्टिकुलर नेचर।
नाउ वी हैव एक पर्टिकुलर नेचर, राइट? नेचर एक रात में चेंज नहीं होता. नेचर चेंज होता है only when we practice Krishna consciousness, but it's a very gradual process. Okay, so this is something about nature. And what Krishna is saying in the third line, the last line, what can repression accomplish? मतलब अर्जुन से कृष्णा कह रहे हैं कि रिप्रेशन करने से स्वभाव चेंज नहीं होता. हमारा अगर स्वभाव बदलना है तो जैसे मुझे मेरा गुस्से वाला स्वभाव है, तो बस मैं गुस्से को ऐसे जान मुझ में और आर्टिफिशियल तरीके से अगर मैं रोकने का प्रयास करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा. रिप्रेशन कैनॉट अकम्प्लिश, कैनॉट चेंज आवर नेचर. दबाने से हमारा नेचर चेंज नहीं होता है. नेचर चेंज होता है जब वी गेट अ हायर टेस्ट. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. स्वभाव changes when we associate with spiritual personalities, when we associate with devotees, तब हमारा स्वभाव चेंज होने के चांसेस रहते हैं. सिर्फ स्वभाव को दबा देने से स्वभाव चेंज नहीं होगा, बल्कि एक दिन ऐसा होगा हम उसको दबाते जाएंगे देन इट विल आउटबर्स्ट, राइट? स्वभाव, so that is the nature of a स्वभाव. It's very difficult to change the nature. Just keep this in the mind. That's why it's said in the English, there is a proverb. It's very difficult to teach new tricks to old dogs, right? There is a proverb in English, na? It's very difficult to teach new tricks to old dogs. Why? Because अभी old people का अपना एक स्वभाव बन चुका है. अगर वो चाय पीते हैं तो उनका स्वभाव वो चाय पिएंगे. It's very difficult to change them. Now it's very difficult, but if they are young, it's easy to change. Yes, because स्वभाव is there, but it's flexible. We can change that. इसीलिए बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाने में बहुत जल्दी बच्चे ले लेते हैं, बिकॉज स्वभाव इज देयर बट इट्स वेरी इजी टू चेंज इट. बट एज वी प्रोग्रेस in our life and as we become old, it's very difficult to teach them because of fixed swabhav is nature has become. So this is the definition of swabhav or nature from Bhagavad Gita that Krishna says to Arjuna. Now, coming to now let's discuss about women's nature, right? Women's nature from the Shastras only. No concoction, no speculation, nothing. Only from the Shastras. So first we heard about Swabhava. What is the meaning of Swabhava? How we have acquired Swabhava and how we can change Swabhava. We cannot change Swabhava by repression, right? That we learned. We can change Swabhava only by Krishna consciousness, only by practicing devotional service. That's the only means to change Swabhava. Okay. As we see, even in the Shastras, we see so many examples that, for example, in Mahabharata, let's take the example of Mahabharata. हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति को अगर एक ही प्रकार का टीचर मिला है और एक ही प्रकार का एनवायरमेंट मिला है, तो भी व्यक्ति के डिफरेंट स्वभाव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन, राइट? Duryodhan was living in the same palace. He had the same teacher, Dronacharya. He had brothers like Pandavas, right? But still, his swabhava was very envious, right? He has the feeling of hatred, right? So this shows कि भाई व्यक्ति का स्वभाव जो बनता है वो उसके पिछले जन्मों से चला आ रहा है. उसको दो व्यक्ति सेम एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो भी व्यक्ति का स्वभाव अलग हो सकता है, एज वी सी इन द महाभारत, राइट? Okay, so this is also one other thing I want to discuss, and now let's talk about women's nature. So first coming to the Srimad Bhagavatam, which is the highest authority for devotees. This is the highest spiritual authority, the highest pramana is Srimad Bhagavatam. What Srimad Bhagavatam says about women's nature? Let's discuss. In the 8th canto of Srimad Bhagavatam, जहां पर मोहिनी मूर्ति का डिस्क्रिप्शन आता है. मोहिनी अवतार, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया ना. जब समुद्र मंथन हुआ, सो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार. एंड मोहिनी herself is saying कि
मतलब she was like a prostitute. Mohini avatar is like the lady is like a prostitute. She's not, she is meant to allure other men. भगवान ने अवतार ही ऐसा लिया था मोहिनी अवतार कि वो उसका पर्पस ही था टू अल्यूर द डीमंस, राइट? तो जब श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो के 8.9.9 वर्स, note the words you can see in Srimad Bhagavatam, you can check in the Srimad Bhagavatam 8.9.9, वहां पर जब डीमंस और देवता, स्पेशली डीमंस, जब मोहिनी मूर्ति से बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, और बोथ डीमंस एंड देवता आर बोथ sons of Kashyap, you know that Kashyap has two wives, Diti and Aditi. Diti gave birth to demons and Aditi gave birth to demigods. So father is same, mothers are different, but father is the original, father is the main person na. So father is the same, matlab they are brothers, right? तो जब मोहिनी मूर्ति से डीमंस बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, तब मोहिनी मूर्ति डीमन से कह रही है कि भाई आप तो कश्यप के बेटे हो, कश्यप इज सच एक्साल्टेड ब्राह्मणा, आप मुझ जैसे प्रोस्टिट्यूट से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? ठीक है, मुझ जैसे प्रोस्टिट्यूट से आप क्यों अट्रैक्ट हो? व्हाई आर यू गेटिंग अट्रैक्ट? आई एम अ प्रोस्टिट्यूट. दिस इज व्हाट इज सेड इन 8.9.9 वर्स. इफ यू चेक मोहिनी मूर्ति सेइंग दैट, देन मोहिनी मूर्ति सेज इन दैट वर्स, विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न याति ही. Mohini Murthy is saying to the demons and demigods both, Mohini Murthy is saying, those who are learned person never puts his faith in a woman. This is the original words of Srimad Bhagavatam 8.9.9, where Mohini Murthy is saying to the demigods and demons that those who are learned person never puts his faith in a woman. Right? In that purport, उसके पर्पट में शिला प्रभुपाद is quoting चाणक्य पंडित. It is another authority. Srila Prabhupada often quotes Chanakya Pandit in his purports. If you are reading Srila Prabhupada purports, Srila Prabhupada often quotes Chanakya Pandit because he was a Pandit. So he was a pure Brahmana, he was a Pandit, he was a learned person. So Srila Prabhupada often. So Chanakya Pandit, in that purport, Srila Prabhupada quotes Chanakya Pandit. What Chanakya Pandit says? विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च. विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च. Never put your faith in a woman or a politician. स्त्री और एक पॉलिटिशियन पे कभी विश्वास मत रखो. ठीक है, तो वहां पे प्रभुपाद और भी लिख रहे हैं. प्रभुपाद लिख रहे हैं कि women in general should not be trusted. So what to speak of women loitering like a prostitute? Prabhupada वहां लिख रहे हैं कि women in general should not be trusted. So what to speak of women loitering in a street like a prostitute? ठीक है, तो वो तो ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं सकते. ठीक है, और हम देख रहे हैं कि भाई मोहिनी मूर्ति से सिर्फ देवता या डीमंस अट्रैक्ट नहीं हुए थे. मोहिनी मूर्ति अवतार में अगर आप लीला देखेंगे तो इवन शिवा, लॉर्ड शिवा also got attracted to the Mohini Murti. Right? Lord Shiva, if you see that episode of Mohini Murti, Lord Shiva also got attracted to the form of Mohini Murti because he is Vishnu, na? So he got attracted, and then afterwards he realized, "Arey, मैं क्या कर रहा हूँ?" Parvati said, "What are you doing?" Then he realized, "Oh, what I am doing? I am running after a prostitute." So this was the episode that we see in 8th canto. Okay. Now coming to the 9th canto. Coming to the 9th canto, in the 9th canto of Srimad Bhagavatam, there is a episode of Pururava and Urvashi. पुरुरवा, जो मैंने आपको पिछले क्लास में ययाति के एपिसोड में बताया था कि पुरुरवा जो थे वो सोम और तारा के मिलन से आए बुद्ध, और बुद्ध और ईला के बेटे थे पुरुरवा. मतलब सोम डायनेस्टी से आते, चंद्रवंशी, इज अ चंद्रवंशी, उनकी डायनेस्टी से आते पुरुरवा. सो पुरुरवा वाज अ ग्रेट किंग एक्चुअली. तो एक बार नारद जी, ये 9th कैंटो में ये लीला आती है, तो एक बार नारद जी इंद्र की सभा में पुरुरवा की महिमा को गा रहे थे.
कि पुरुरवा सच अ ग्रेट किंग, सच अ ग्रेट किंग, और ऐसे ऐसे उनकी ग्लोरीज को गा रहे थे. तो उर्वशी was sitting in there. Urvashi, she is an apsara na. She was sitting there in the assembly of Indra. So she also heard and she got attracted to Pururava. She got attracted to Pururava and she thought of alluring Pururava. क्योंकि अप्सराज आर मेंट फॉर एल्यूरमेंट. तो ऐसे भी वहां पे एपिसोड आता है कि उर्वशी को ऐसे भी श्राप मिला था कि उसको कुछ समय के लिए उसको इस अर्थली प्लैनेट्स में, उसको इस भौतिक जगत में उसको रहना पड़ेगा, नॉर्मल एक लेडी की तरह रहना पड़ेगा. तो उर्वशी वाज ऑलरेडी कर्स्ड. तो वो सोचा ठीक है, अच्छा चांस है, चलो पुरुरवा के पास मिलना है मुझे, पुरुरवा से मिलना भी है, राजा पुरुरवा से, तो लेट्स गो. तो उर्वशी वेंट टू पुरुरवा. और अप्सराएं लोग तो ज्यादा वेट नहीं करते. शी प्रपोज्ड to Pururava. Will you marry me? And Pururava, when he saw the beauty of Urvashi, she was, क्योंकि Urvashi, she is not an ordinary Apsara. You know that? Urvashi is not an ordinary Apsara. She appeared from the Janga of Vishnu. Urvashi appeared from the Janga, thighs of Vishnu. भगवान विष्णु की थाइस से उसका अवतार, उसका अपीयर हुई है वो. ठीक है. सी इज नॉट एन ऑर्डिनरी अप्सरा. और शी इज वेरी ब्यूटिफुल, extremely beautiful. We don't know the definition of beauty because we have seen beauty as Miss Universe and Miss World, which don't have any beauty at all. So for our definition of beauty, we don't know the definition of beauty actually. What is the definition? Yeah, we can find in scriptures also the definition of beauty. That is also there in the Shastras. Sometimes we can discuss that also. Okay. So now Urvashi proposed Pururava. Will you marry me? And Pururava was so enchanted by the beauty of Urvashi and immediately said yes. Now उसके बाद क्या हुआ कि gradually, धीरे धीरे, Pururava got so addicted and so attached to Urvashi. Yes, one more thing I want to say here in this episode. Urvashi made 3 conditions. Urvashi ने 3 condition रखी Pururava के साथ. So Pururava, उर्वशी गेव 3 कंडीशंस कि मैं 3 कंडीशन में आपके साथ रहूंगी, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होगा मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी. बट पुरुरवा सो अट्रैक्टेड टू उर्वशी, तो बोले यस यस, व्हाट एवर कंडीशन इज देयर आई विल एक्सेप्ट. तो उर्वशी गेव 3 कंडीशंस. व्हाट वाज द 3 कंडीशन? फर्स्ट इज स्वर्ग लोक में, आई डोंट नो because there in Srimad Bhagavatam, Urvashi says that I have 2 lambs. बकरियों के बच्चे, 2 lambs. ठीक है. तो उसको आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है. मेरे 2 लैम्ब्स हैं, उनको आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है. सेकंड इज, मैं जो भी खाऊंगी वो घी में ही पकना चाहिए. बिकॉज मे बी इन स्वर्ग लोक, Prabhupada says, I heard in one lecture कि स्वर्ग लेक में सब घी का ही व्यंजन होता है, तेल वेल यूज नहीं होता है, ओनली घी इज यूज्ड. सो उर्वशी ऑल्सो गिव द कंडीशन दैट मैं सब कुछ जो भी खाऊंगी वो घी में ही होना चाहिए. थर्ड इज, I don't want to see you naked at any time. That means in the daytime or when there is light. Okay, definitely when they have bodily relationship, it can happen, but in the daytime and when there is light, I don't want to see you naked. That was the 3 conditions. First is protect my 2 lambs. Second is whatever I will eat in ghee. Or third is I don't want to see you naked at any time except when we have relationship. Okay. So these are 3 conditions. और अगर ये condition fulfill नहीं होगी, I will leave you and go. ठीक है. तो Pururava said, okay, I will fulfill your condition. हमेशा आप ये conditions fulfill करेंगे. So time starts and days keep on passing. Pururava cannot spend a single minute without Urvashi. He was so attached to Urvashi. अभी इंद्र की सभा में काफी समय हो गया उर्वशी को गए. तो इंद्र एक दिन अपनी सभा में बैठे बैठे सोचने लगे, अरे काफी समय उर्वशी को हो गया, अभी उर्वशी को वापस बुला लो.
शी इज एन अप्सरा ना, अप्सराओं का कोई घर नहीं होता, कुछ कोई ऐसा कोई, दे आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीथिंग। तो इंद्र ने कहा कि उर्वशी को वापस बुला लो। तो इंद्र सेंट गंधर्वास टू द अर्ली प्लैनेट टू ब्रिंग उर्वशी। तो जैसे ही गंधर्व लोग पुरुरवा के राज्य में गए, तो उन्होंने उर्वशी के लैम्ब, दो लैम्ब से उसको चोरी कर लिया। तो रात का समय था, चोरी किया। तो उर्वशी तुरंत उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे लैम्स को कोई लेकर गया, अरे मेरे लैम्स को कोई ले गया, तुम आप क्या कर रहे थे। और खराब खराब अपने हस्बैंड, जैसे कई बार ऐसा होता है गुस्से में, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, ये मेरे लैम्स को कोई ले गया, समथिंग समथिंग, इट्स रिटन इन श्रीमद् भागवतम, यू कैन रीड इट। मैं इतना खराब शब्द नहीं बोलूं, पर उन्होंने, उसने बहुत खराब खराब शब्द कहा मतलब तो जस्ट क्योंकि शी वॉज वेरी मच अटैच टू द लैम्स, और उसको लेकर गए। तो पुरूरवा थॉट ऑफ कि भाई अभी उर्वशी मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो ही डिडंट, मतलब जैसे बोलते ना सूद बूद खो जाना एवरीथिंग, अपनी बुद्धि खो देना, इंटेलिजेंस को खत्म कर खो देना। So he lost all the intelligence, all the discrimination, and he started running. He started running to find the lambs at the dead of the night, रात के समय। और फिर he saw that Gandharvas were taking the lambs, so he just tried to kill the Gandharvas. तो Gandharvas डर गए और they ran away and kept the lambs, मतलब छोड़ दिए lambs को, they ran away because Pururava was a great king, na? He was very powerful, brave, courageous at the same time. Okay, so Gandharvas left the lamb and they went away. But what did the Gandharvas do? They are very clever. They they left the lambs, but they made a बहुत बड़ा प्रकाश, डेड ऑफ द नाइट था, रात का समय था, पर उन्होंने एक जोर से लाइट किया। ठीक है, लाइट करने की वजह से एवरीथिंग वाज क्लियरली सीन, एंड एट दैट टाइम पुरूरवा वाज ऑलमोस्ट नेकेड, he was not wearing properly, he was naked, and Urvashi saw Pururava naked. Now so if the one condition is satisfied, other is not satisfied, so Pururava, so Urvashi said, no, I am now going, I want to go now. Pururava was highly disappointed. Pururava, मतलब disappointed is just a small word. पूरे तरह से ब्रेक हो चुके थे पुरुरवा, जस्ट हियरिंग कि उर्वशी अब छोड़ के जा रही है। बट देन ऑल्सो उर्वशी लेफ्ट, बिकॉज अप्सराज आर लाइक दैट ओनली. Apsaras doesn't feel like he is my husband, he is my wife. No, there's nothing like, no bondage, no duties for Apsaras. They're meant for that only. So she went, or Pururava was left alone. Now Pururava keep on roaming here and there like a mad person. He got mad after Pururvashi. Then one day, it's a big story. I'm just shortening this story. So, but one day, Pururava found Urvashi. One day, Pururava found Urvashi, and he started shouting at Urvashi. तुम कैसी क्रूअल लेडी हो, तुम कैसी इमोशनलेस लेडी हो, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं है मेरी, ऐसे से समथिंग और द अदर ही स्टार्टेड सेइंग टू उर्वशी. देन in Srimad Bhagavatam 9.14.36, if you see, 9th canto 14th chapter 36 verse, if you see, Urvashi started speaking to Pururava, seeing the condition of Pururava. Urvashi started speaking to Pururava, seeing the condition. Urvashi क्या बोली? दो वर्सेस बोली, 9.14.36, 9.14.37. Okay. Now she started saying about women, which she herself was. She said, I'm not saying the whole verse. Kwapi sakhyam na vay strinam vrikanam hridayam yatha. Urvashi said, Kwapi sakhyam na vay, Kwapi sakhyam na vay strinam vrikanam hridayam yatha. Urvashi is saying, why do you want to make friendship with Stri? Vrikanam. You know the English meaning of Vrikanam?
Vrika. Vrikana means ladies are like wild foxes. They're like foxes. Foxes. Vrikana means, if you see the English version of Vrikana, it means foxes, wild foxes. Hridayam yatha. Their heart is like foxes, wild foxes. Why do you want to make friendship with Stree? This is what Urvashi said to Pururava. And another verse, which is far more, क्या बोलते हैं? She said, one more verse, next verse. She said, स्त्रियो हि अकरुणः करुणा दुष्मर्षः प्रिय साहसः गृह्णन्ति अल्पार्थपि विश्रब्दं पतिं भ्रात्रम् अपि उता. This is this is the verse 9.14.37. ठीक है. यहाँ पे उर्वशी कह रही है स्त्रियों ही अकरुणः करुणा. एक एक शब्द देखिए क्या क्या बोल रही है स्त्रियों के लिए. स्त्रियों के लिए उर्वशी क्या बोल रही है? स्त्रियों ही अकरुणः. अकरुणः मीन्स मर्सीलेस, क्रूरः, cunning. This can be very, but we will understand. See, first of all, we are trying to read from the Shastras, what Shastras has to say, and then we will understand why is it said like this. हम लोग समझेंगे कि भाई क्यों ऐसा बताया गया है. पहले हम शास्त्रों के ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स को पढ़ लें कि भाई शास्त्र में क्या बताया गया है. And don't get disheartened by this. Let's see. We should know the truth actually. तो यहाँ पे क्या बोल रही है उर्वशी? स्त्रियो ही अकरुणः. अकरुणा मीन्स मर्सीलेस, क्रूरः, cunning, दुर्मर्षः. दुर्मर्षः मीन्स intolerant, प्रिय साहसः. For priya sahasha means for one's pleasure she can do anything. Grananti, kill. Patim bhrataram api utaha. For one's own pleasure, grananti. Grananti means kill. To whom? Kill whom? Patim bhrataram. Kill her own husband as well as brother. For one's own pleasure. Why are you so attached to a woman? That is what Urvashi wants to say to Pururava. Ladies are merciless, cunning, intolerant, can do anything for one's own pleasure. They can even grananti, kill her own husband and or brother. So why are you so attached to women? This is what Urvashi wants to say to Pururava. Okay. And actually, yeah, these statements can be very intolerable and irrelevant for us devotees. But can we say that this is totally wrong? Seeing the present situation in the society, अगर आप incidences देखेंगे न्यूज़पेपर्स में, अगर आप टाइप करेंगे इंटरनेट पे न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, क्या ऐसे न्यूज हमें नहीं मिलते हैं बिल्कुल? Yes, yeah, it happens. And not in 1 year. Yes, Madhuri. Yes, Mataji, it's a reality. Yes, Madhuri. It's a reality. And अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग एडवांस हो रहा है और जैसे जैसे स्त्रियों में इंडिपेंडेंस की भावना बढ़ रही है, सेपरेट हो रही है लेडीज, डिवोर्स हो रहा है लेडीज में ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही है. हाँ, हमें सुनने में खराब लग सकता है कि अरे स्त्रियों के लिए ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे खराब है. Yes, maybe, but see, we have to hear the truth from the Shastras. अगर शास्त्रास में सब स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर उर्वशी के द्वारा बोला गया है, अगर मोहिनी मूर्ति जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं उन्होंने ऐसा बोला है, तो गलत तो नहीं बोला होगा, राइट? कुछ तो उसमें सब्सटेंस है. दैट्स व्हाई इट्स रिटन इन द शास्त्रास. ओके, सो ठीक है. सो दिस इज द स्टेटमेंट. दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. नाउ लेट्स study about women's nature from Mahabharata. From Mahabharata, there is a very nice episode in Mahabharata also. In the दान धर्म पर्व.
There is a Dan Dharma Parva in Mahabharata where there is a conversation between Yudhishthir and Bhishma. भीष्म पितामह, युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में संवाद है, जहां पे युधिष्ठिर महाराज दान धर्म पर्व में, अगर आप देखेंगे महाभारत के, तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से प्रश्न कुछ कर रहे हैं कि प्लीज मुझे स्त्रियों के स्पष्ट प्रश्न यही है कि प्लीज मुझे स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताइए, ठीक है, मुझे प्लीज स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताइए, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न यही है। तो भीष्म पितामह वहां पर युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि स्त्रियों के स्वभाव के बारे में चर्चा एक बार नारद मुनि की पंचचूड़ा अप्सरा के साथ भी हुई थी। पंचचूड़ा अप्सरा ब्रह्मलोक की अप्सरा है, उनके बीच में नारद जी और पंचचूड़ा अप्सरा के बीच में कन्वर्सेशन था जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, राइट? Okay, so we'll discuss that. We'll just read out that conversation. I will not paraphrase it. I will read out the conversation, okay, from the Mahabharata itself. Okay. तो जब नारद जी पंचचूड़ा अप्सरा से, ये कन्वर्सेशन कौन बता रहा है? भीष्म पितामह नारद जी से बता रहा है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, ठीक है। जब युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से पूछा तो भीष्म पितामह ने ये कन्वर्सेशन नारद जी और पंचचूड़ा अप्सरा का युधिष्ठिर महाराज से कहा, राइट? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि एक बार घूमते घूमते नारद जी went to the Brahmalok, because Narad ji can wander anywhere, can go anywhere in the whole universe. So he went to the Brahmalok. There he met this Panchachuda Apsara, जो ब्रह्मलोक में रहती थी, और वहां पर इस अप्सरा से मिलने के बाद नारद जी ने उनसे प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि मैं आपसे स्त्रियों के स्वभाव के बारे में जानना चाहता हूं। तो जब ये क्वेश्चन पंचचूड़ा अप्सरा से पूछा, what replies he said, it's a very good conversation between Narad Muni and Panchchuda Apsara. Okay, so it's a conversation, and सबसे पहले पंचचूड़ा अप्सरा ने कहा कि मैं स्त्री होकर स्त्रियों की निंदा नहीं कर सकती। मैं स्त्री होकर स्त्रियों की निंदा नहीं कर सकती। I don't want to say anything about ladies. Being myself a lady, I don't want to say anything ill about ladies. Okay, तब नारद मुनि ने पंचचूड़ा से कहा कि झूठ बोलने में प्रॉब्लम है, सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट स्पीक आउट, यू जस्ट से व्हाट इज द रियलिटी। ओके, तो फिर नाउ शी स्टार्टेड स्पीकिंग टू नारद मुनि। I will just read from Mahabharata. This is the text from Mahabharata. I am going to read what is there in the Mahabharata. Only few verses I will read, not all. So she started speaking. When she started speaking, she said, पंचचूड़ा बोली, नारद जी, कुलीन रूपवती और सनाथ युवतियों भी मर्यादा के भीतर नहीं रह सकती, यह स्त्रियों का दोष है। कुलीन मीन्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, रूपवती मीन्स ब्यूटीफुल, और सनाथ युवतियां, सनाथ मीन्स दोज हु हैव प्रोटेक्शन, दे आल्सो कैन नॉट लिव विद इन लिमिट्स, यह स्त्रियों का दोष है। ओके, देन शी सेड, यदि स्त्रियों को दूसरों से मिलने का अवसर मिल जाए तो वे सद्गुणों में विख्यात, धनवान, अनुपम रूप, सौंदर्यशाली तथा अपने वश में रहने वाले पतियों को भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। देन शी सेज, प्रभु, हम स्त्रियों में वह सबसे बड़ा पातक है कि हम पापी से पापी पुरुषों को भी लाज छोड़कर स्वीकार कर लेती है। दिस इज व्हाट इज, ठीक है। फिर देन शी सेज, जो पुरुष किसी स्त्री को चाहता है, उसके निकट तक पहुंचता है और उसकी थोड़ी सी सेवा कर देता है, उसी को वह युवतियां चाहने लगती है। गेटिंग? राधा माता जी, यू आर गेटिंग? इट्स हिंदी इज वेरी टफ. Hindi is very tough. Yes. Can you repeat the last 3 lines, please? I mean, I got the first one, but the last 3, sorry, they were very powerful, impactful. Wanted to make note. Yes, okay, I will repeat. In the 15th verse, it said, जो पुरुष किसी स्त्री को चाहता है,
उसके निकट तक पहुंचता है. निकट तक मीन्स ही बिकम्स वेरी क्लोज टू दैट लेडी, दैट एंड और उसकी थोड़ी सी सेवा कर देता है और उसकी किसी प्रकार से थोड़ी सी हेल्प कर देता है, उसी को वे युवतियां चाहने लगती है. She started loving that person. मतलब if somebody, if a man helps a lady, somewhat helps a lady and try to become close to that woman, then automatically that woman started loving that person. This is the nature of a woman that Panchashuda is telling. ठीक है. Then she says, स्त्रियों में स्वयं मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता. जब उनको कोई चाहने वाला पुरुष ना मिले और परिजनों का भय बना रहे तथा पति पास हो, तभी ये नारियां मर्यादा के भीतर रह पाती है. मतलब they remain within the limits only when the husband is nearby and when the relatives are nearby, when she is under the protection of somebody, then only she will remain within the limits. Okay, I will read few 2-3 verses more, then we'll come to our discussion. Okay, then she says, जो बहुत सम्मानित और पति की प्यारी स्त्रियां हैं, जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी घर में आने जाने वाले अंधे, गूंगे और बौनों के साथ भी फंस जाती है. I don't know, मतलब this must be real only. It's beyond my imagination. But it's written in Sri Mahabharata. The original verses I can read out. याशत शाश्वत बहुमता रक्ष्यन्ते दहिता स्त्रियः अपीता संप्रसजन्ते कुब्जा अंध जड़वामनिः. This is what Panchashuda is saying. Then महामुनि देवर्षि नारद, जो पंगु है अथवा जो अत्यंत घृणित मनुष्य है, उनमें भी स्त्रियों को आसक्ति हो जाती है. इस संसार में कोई भी पुरुष स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है. अगम्य मीन्स डिफिकल्ट. इस संसार में कोई भी पुरुष स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है. अगम्य मीन्स डिफिकल्ट नहीं है. मतलब शी कैन allure any person in this whole world. Ladies can allure any person in this whole world. Okay, सिर्फ 2-3 verses more. There are so many verses. I'm just reading the few. स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है. उनका सेवन बहुत ही कठिन काम है. इनका भाव जल्दी किसी के समझ में नहीं आता. इनका भाव जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता. ठीक उसी तरह जैसे विद्वान पुरुष की वाणी दुर्बोध होती. मतलब just like it's very difficult to understand the language of an intelligent person, a scholarly person, similarly it's very difficult to understand a woman. That's what Panchashuda is saying. Then she says, अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती, समुद्र कभी नदियों से तृप्त नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियों को एक साथ पा जाए तो भी तृप्त नहीं होती. इसी प्रकार सुंदर नेत्रों वाली युवतियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती. तृप्त मीन्स सैटिस्फाइड. Okay, last. Then she says, यमराज, वायु, मृत्यु, पाताल, धार, विष, सर्प और अग्नि, ये सब विनाश के हेतु एक तरफ और स्त्रियां अकेली एक तरफ बराबर है. It says, यमराज, वायु, मृत्यु, पाताल, विष, सर्प और अग्नि, ये सब विनाश के हेतु एक तरफ और स्त्रियां अकेली एक तरफ बराबर है. Okay, so last श्लोक पंचशूड़ा says, नारद, जहां से पांचों महाभूत उत्पन्न हुए हैं. पांचों महाभूत मीन्स भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. दीज आर द 5 पंच महाभूत. तो शी सेइंग कि जहां से पांचों महाभूत उत्पन्न हुए हैं, जहां से विधाता ने संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है तथा जहां से पुरुषों और स्त्रियों का निर्माण हुआ है, वहीं से स्त्रियों में यह दोष भी रचे गए हैं. अर्थात यह स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं. दिस इज द नेचर ऑफ अ woman. This is what is told by Panchashuda to Narad. She didn't want to say actually. Initially she didn't want to say. वो बोलना नहीं चाहती थी. क्यों? क्योंकि she knows the reality. She doesn't want to say the reality. But she was forced by Narad Muni to say the reality, and she has to do that. Okay, so this is what is said in Shastras about women.
when we hear all these things about the nature of a woman, we feel like क्या बोला गया हमारे बारे में शास्त्रों में, इतना खराब, क्या हम इतने खराब हैं? Are we really such bad person? This is what comes in our mind. But see, we have to understand one thing, that if it's written in the Shastras, then we shouldn't, first of all, we should accept the statement. अगर ये शास्त्र अगर ये शास्त्रों में बताया गया है तो वी शुड एक्सेप्ट द शास्त्रास एज इट इज. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे शिला प्रभुपाद के टाइम भी करीब जब उस समय जब शिला प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे वेस्ट में, देन देयर वाज अ टाइम दैट अमेरिका सेंट अ रॉकेट टू मून. अमेरिका सेंड अ सैटेलाइट रॉकेट टू मून. ठीक है. और उस समय शिला प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट कहा कि नोबडी कैन गो टू मून बिकॉज अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, नोबडी कैन गो टू मून. और उस स्टेटमेंट की वजह से शिला प्रभुपाद ने जब ऐसा कहा कि भाई नोबडी कैन गो टू मून, और उसकी वजह से कई लोगों का शिला प्रभुपाद के ऊपर फेथ खत्म हो गया, शास्त्रों के ऊपर फेथ हिल गया. यार शास्त्र में गलत लिखा है, सी पीपल आर गोइंग टू मून, सी the astronauts are going to moon, right? But after so many years, now everybody knows that nobody has gone to the moon and it's not possible to go to the moon. Many videos have been published which tells that nobody can go to the. So at that time Srila Prabhupada clearly said that nobody can go to the moon. Moon is a heavenly planet. How can anybody go without a qualification? बिना क्वालिफिकेशन कोई कैसे स्वर्गलोक में जा सकता है? हम लंदन अमेरिका बिना वीजा के नहीं जा सकते, तो मून में कैसे जा सकते? ऐसे वर्ड श्रीला प्रभुपाद सेज स्ट्रेट फॉरवर्डली इन द लेक्चर, बट स्टिल पीपल didn't believe the words of Srila Prabhupada, didn't believe Shastras. And then after many years, this was disclosed that actually it was bluff. Right? And everybody knows that now. Right? इसीलिए हमें जब शास्त्र का कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है जो रियली हमें we know that okay ऐसा ऐसा लिखा है लेडीज के बारे में, ऐसा ऐसा women नेचर के बारे में लिखा है, it really hurts us कि भाई हम लोग इतने खराब हैं कि हमारे बारे में इतना खराब लिखा है. पर फर्स्ट ऑफ ऑल what we should do, we should accept the statement of the shastras कि भाई ऐसा लिखा है, इसमें जरूर कोई सब्सटेंस होगा. और we can see in the present day society and it's true also. ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हम देख नहीं पा रहे हैं, we are seeing that in the reality also, right? See now this statement, never trust a woman. See, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ठीक है शास्त्रों में ये सब चीजें बताई गई है, लेडीज ऐसी उर्वशी कह रही है, पंचचूड़ा अप्सरा कह रही है, बट एट सेम टाइम हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि कुंती महारानी के प्रेयर्स फर्स्ट कैंटो में आते हैं जो सेजेस ऋषि मुनि गाते हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने फर्स्ट कैंटो में उसको रखा. सबसे पहला प्रेयर अगर कुछ कोई रखा है सुखदेव गोस्वामी ने तो कुंती महारानी प्रेयर्स रखा है. Such an exalted personality Kunti Maharani, and she is a woman, right? और ऐसे शास्त्र, ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स में कितने सारे exalted ladies हैं. Gandhari, Srila Prabhupada says that Gandhari was at the same position as Bhishma Pitama. This is what Srila Prabhupada says, that Gandhari was in the same level as Bhishma Pitama. So Gandhari was a woman only, right? So we cannot say that okay शास्त्रों में सिर्फ नेगेटिव साइड ही दिया गया. नो, शास्त्रों में पॉजिटिव भी दिया गया है. सो हाउ वी हैव टू टेक दिस स्टेटमेंट, और दोनों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. अगर हम कुंती महारानी के प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवतम में दिया है, तो अगर उर्वशी का स्टेटमेंट 9th कैंटो में ऐसा दिया है कि स्त्री आर, द लेडीज आर मर्सीलेस, कनिंग, दे कैन किल फॉर हर ओन प्लेजर, शी कैन डू एनीथिंग. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को हमें एक्सेप्ट करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वी शुड एक्सेप्ट दैट आल्सो, राइट? राइट. सो व्हाट शुड बी आवर अंडरस्टैंडिंग इन दिस? सो अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सी व्हाट आवर आचार्य सेज रिगार्डिंग द स्टेटमेंट नेवर ट्रस्ट अ वुमन.
So Acharya says that when it's said in the Shastras, never trust a woman, it's actually, it's a caution, it's an alarm to all those men that you shouldn't trust, you shouldn't get allured by the women's beauty, women's affection, women's behavior. It's an alarm to them. अगर शास्त्रों में ऐसा दिया गया है कि भाई स्त्रियां कितने भी हद तक जा सकती है, स्त्रियां ऐसी है वैसी है, तो it's actually an alarm to the opposite sex, that is man, that be cautious. It's a warning, it's an alarm to them कि भाई ध्यान रखिए, स्त्रियों के साथ जब आप डीलिंग्स करते हैं तो आप ध्यान से करिए. ये सब एपिसोड, ये सब इंसिडेंट्स, पुरुरवा के इंसिडेंट या ययाति महाराज के केस में हम देख सकते हैं. ययाति महाराज स्टोरी भी हर्ड ना, कि किस प्रकार से वो देवयानी के सौंदर्य से इतने ज्यादा प्रभावित है कि बुढ़ापा आ गया. when he got the old age, he is begging to get a youth age. He is begging to get youth age from his old son. Okay, he is begging to okay. So this is first thing how we can understand this, that when we say that when it's said in the Shastras, never trust a woman, it's not to blame. It's not to blame the women or lower their position. It's not like that. It's just a caution, cautioning the men. You see, Pururava, just a great king, got allured with women. Even Brahma, who is the creator of this universe, who is the first person in this universe, he got attracted to his own daughter. Right? You know that's the incident? When Brahma created the universe, when Brahma created the ladies, he got attracted to his own daughter. He started running after his own daughter. वो अपनी बेटी के पीछे भागने लगे because he got attracted by her beauty. So ये सब episodes, this is comes in Bhagavatam only, right? Lord Shiva got attracted by the beautiful personality Mohini Murti. See, so जब हम इस प्रकार के इंसिडेंस श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, तो what this is a lesson for us कि भाई इतने great personalities स्त्रियों से आकर्षित होके अपना सब भूल रहे हैं, तो we should, this is a caution, this is an alarm to the men that okay, ध्यान रखिए, be alert. That's why these statements have been given. Okay. Second thing, this is the first thing. Second is, Srila Prabhupada says that Stri, what is the meaning of Stri? What is the meaning of Stri? Stri means one who expands. One who expands the enjoyment. One who expands the enjoyment. Right? तो श्रीला प्रभुपाद कई बार स्त्री शब्द को ऐसा भी बोले कि स्त्री, प्रभुपाद says, स्त्री may also refer a man who is too much engrossed materially. Right? Because see, we all are Prakriti. Krishna is only Purusha. Right? We all are Prakriti. Krishna is only Purusha. This men, women, yes, there is a bodily difference, but still ultimately we are all part and parcel of Krishna, and we are all enjoyed by Krishna. Right? We are all Prakriti, the energies of Krishna, and Krishna is the enjoyer. Krishna is the one Purusha. Right? So जब women के लिए या स्त्री जब शब्द बोलते हैं, तो it refers to all that person who is not Krishna conscious, who is not a devotee. ठीक है? We cannot say when we are hearing that, ठीक है, हम लोग जब सुने कि भाई स्त्री का she can be merciless, man can also be merciless, right? Man can also be lusty, man can also kill women, right?
So when Srila Prabhupada says that this refers to all that person who is not Krishna conscious and those who are too much materially engrossed in sense enjoyment, they can go to any extent. They can go to any extent. Okay. So this statement of Srimad Bhagavatam we have to take like this, that this refers to, and okay, this is the two things. Third thing is, we see that we say in Srimad Bhagavatam, this is the verse, Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Nashtike. Nashta Prayeshu Abhadreshu. When a person started hearing and chanting of the holy name, then all that abhadra, all that unwanted things in the heart, that means all that bad nature that we have acquired because of our past millions of lives, they start going away. How? Nityam Bhagavata Seve. Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Nashtake. And then devotional service start developing. Devotional service and Krishna appears in our heart. When all the unwanted things are clear, Krishna appears in our heart. How? When we start chanting and hearing the holy name, right? So, ये सब चीजें स्वभाव is there, which is definitely acceptable to us. It's there in the Shastras. It's there in Srimad Bhagavatam, right? पर जब कोई व्यक्ति भक्ति प्रैक्टिस कर, this is for general women. ये एक जनरल स्त्री का नेचर बताया गया है, which is there in the women. But जब एक स्त्री भक्ति प्रैक्टिस करने लग जाती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करती है, भगवान का नाम जप करती है, तो धीरे 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 ये स्वभाव बदलने लग जाता है, राइट? सो this is a general rule. This is not a universal law कि भाई हर स्त्री ऐसी ही होगी. If she has to change the nature, then she has to practice Krishna consciousness, right? So this is the third thing I wanted to say. Ki Srila Prabhupada comments that this refers to a woman nature, general women's nature, but when this doesn't refer to a devotee woman. Because if you are a devotee, if you are practicing Krishna consciousness, then definitely good qualities will develop in your heart. Good qualities will develop, and you will start having, start improving your swabhav. Okay, so these are the few things that I wanted to discuss in that. Never trust a woman. And see, if we see the examples of Haridas Thakur, okay, for Haridas Thakur, the Maya personified came in her house to allure him. Maya personified came inside the house to allure Haridas Thakur. But did he get allured? Did he get allured? No. How? Because he's a pure devotee of the Lord. He's a pure devotee of the Lord, right? So this shows कि ये सब जितने भी स्वभाव और जो नेचर की हम बात कर रहे हैं, that can be changed when we practice pure devotional service. This swabhav is there in the ladies, which is mentioned in the Shastras, but it will gradually change as we start practicing Krishna consciousness, right? And one more thing that I want to point from from Bhagavad Gita. Okay, two things. First is Krishna says in Bhagavad Gita, if you see that 3.35 verse, that Krishna says, Shreyan Swadharma Vigunaha Paradharmat Swanushtithat Swadharma Nidanam Shreha Paradharmo Bhayavaha. Krishna says to Arjuna, it is better, far better to perform one's prescribed duties, even though faultily, than another person's prescribed duties. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. So Krishna is emphasizing here that one should follow one's own prescribed duties, one's own dharma. Why? Because see, as I said, that the swabhava is made because of because of the millions of years that we have associated with the modes of material nature. From there the swabhava is made. Okay, or based on the swabhava, everybody has a different swabhava, and because of that swabhava, he got this psychophysical nature, psychophysical body, that psychology, that physical body. और इस psychophysical nature के हिसाब से हमें कुछ धर्म दिए गए हैं, कुछ धर्म. Everybody has one's prescribed duty. ना, स्त्री has different, man has different prescribed duties.
Why is it so? Because by following that dharma, this is what Krishna is saying in Bhagavad Gita, na? You follow your own dharma, don't follow others' dharma. If you follow others' dharma, that will be dangerous. You follow what is prescribed to you. You don't follow what is prescribed for others. Why? Because if you follow your own dharma, then that will put you in the mode of goodness, that will purify you. That will purify your existence. That will free you from sinful reaction. That is what Krishna says in Bhagavad. That following our dharma will free you from all sinful reactions. That will purify your existence. That will put you in the mode of goodness. So two things are very important to get away from this swabhava. First is the ladies, the women should follow his own dharma. She shouldn't follow the dharma of men. And second is, she should, along with practicing the dharma, she should practice Krishna consciousness. If she is doing these two things, then definitely whatever swabhava is mentioned in the Shastras, that she is this, she is that, will become irrelevant. She will go beyond this swabhava. This is the two remedies the Shastra says. First is to follow your own dharma. That will put you in the mode of goodness. And along with following your dharma, practice Krishna consciousness. These two things will rectify whatever bad nature you have acquired because of that body that you have acquired. Okay. Okay, thank you very much. I think that enough discussion we have done. More and more things can be discussed, but still it's 5:45. If any comments, any questions is there, then you can say, then you can put. Hare Krishna Mataji. Yes, Madhavi. Yeah. So I have one question, like what we have discussed, like whatever the description of the woman was given by the Mohini avatar, which as like by all respect, it was a like a kind of a prostitute of avatar, right? Second, it was given by the Urvashi. She was also an Apsara. Third, it was given by Apsara Panchachuda. So all of them three, yeah, all of three were not coming from the Varnashram or coming from any what I will say, like pious thing. So is there any reference where, like, let's say for example, other women, there are other Rishi Patnis or Kunti Mataji, they have explained women's nature or something? See, first of all, these ladies which I mentioned, this Panchachuda Apsara and this Urvashi Apsara and this Mohini Murti Avatar, these three, if I say, अगर आप ऐसा कहें कि ये लोग तो अप्सराएं थे या they are like prostitutes, तो first we have to think that Mohini Murti was Swam Vishnu, Swam Krishna himself. He has assumed the form of Mohini Murti, right? So definitely he is a big authority. He is the biggest authority. Krishna himself is in the form of Mohini Murti. He himself is saying that means he is the biggest authority, right? Yeah, that's what I'm saying now. He has taken this role of a prostitute. That doesn't mean that he has acquired that nature of a prostitute, and out of that nature he's saying this. No, it's not like that. If Krishna has assumed the form of Nrsimhadev, if Krishna has assumed the form of Varaha, which is a hog avatar, right? And Krishna has assumed the form of Matsya, which is a fish avatar, that doesn't mean that he has a mentality of a fish or he has a mentality of a hog. He can give teaching in any of the avatars, right? So Mohini Murti is Krishna himself, is Vishnu avatar. And if he is saying that, if she's saying that, then definitely it's a big authority, right? And second is Urvashi, regarding Urvashi and this Panchachuda. See, Panchachuda, yeah, she is definitely an Apsara, but she is from Brahmaloka. And Brahmaloka is the highest planet in this material universe. Nobody can reach Brahmaloka unless and until he's very pious. See, Apsara, for us, Apsara is like, they have no character. It's not like that actually. See, in Srimad Bhagavatam, I don't remember the verse. I can give you the quotation of that. I can send the verse in the group. In one of the verses, Krishna is saying that among the Apsaras, I'm Urvashi. So this Urvashi, this Panchachuda, they are definitely Apsaras, but it's not like that. They are the highest level of authorities because they belong to the Brahmaloka planets.
which nobody can reach. Can we reach there? No, we cannot. It's not like the prostitute of this earthly planet. They are not like the prostitutes of this earthly planet, those who are sinful. If you are sinful, how can you reach to the Brahma Loka? You cannot reach to Brahma Loka. You have to be very pious to reach to the Brahma Loka, right? But okay, Apsaras are meant for entertainment, but that doesn't mean that they are not pious. They have that service definitely, but that doesn't mean that they are loose people, like they are just हम जैसा सोचते हैं यहाँ पे. It's not like that, right? And one more thing, even Kunti Maharani. Okay, Kunti Maharani, sing Kunti Maharani prayers. Tatha param hamsanam muninam amalatmanam bhakti yoga vidhanartham katham pashyame hi striya. Kunti Maharani herself is saying in her prayer, Tatha param hamsanam muninam amalatmanam bhakti yoga vidhanartham katham pashyame hi striya. I'm a woman, I'm a less intelligent woman. How can I understand this high philosophy that Paramhamsas understand? So she is also, being a woman, she is telling her position that I'm very low. I'm a woman, I'm very low. I'm less intelligent, right? But kya Kunti Maharani is less intelligent? No, she's not. She's the most intelligent woman, right? But in the prayers itself, Kunti Maharani is saying that Tatham pashyame hi striyaha. Being a stri, how can I understand you? That means that she wants to tell that ek stri hone ki jagah wajah se, because she knows the philosophy, na? She knows what's written in the Shastras, right? Being a stri, she knows everything. She knows the Shastras. What is written in Mahabharata, what is written there in the Shastras. So she's just, out of humility, she is praying to the Lord. Being a stri, how can I know you? Right? So this also shows that this is the position of a woman. But see, ultimately the crux, what is the crux? What is the conclusion? What Krishna says in Bhagavad Gita? Krishna says in Bhagavad Gita, Striya Vaishyas Tatha Shudras, whoever be, Striya Vaishyas Tatha Shudras, be he Stri, be he Vaishya, be he Shudra, be is less intelligent, whatever class a person be, he can attain my destination. He or she can attain my destination if he performs pure devotional service. This is the statement of Krishna in Bhagavad Gita. Whoever he or she may be, no matter whatever she be a chandal, but if he or she practices pure devotional service, then she can definitely come to me without fail. So there is no discrimination on the spiritual platform. That's why I'm saying ना कि ये सब जो nature जो बताया गया है वो हमें कैसा लग रहा है? हमें लग रहा है अरे ये तो कितना beyond our imagination. मैं तो ऐसा, मैं जब पढ़ रही थी तो मैं प्रभु से बोला भी, ये तो beyond my imagination लग रहा है ये सब जो स्त्रियों के बारे में लिखा है. पर then Prabhu said that it's beyond your imagination, na, because we are practicing Krishna consciousness. But if you go out and see the world, what's happening outside, then you can definitely I'm 100% sure you can feel that these statements of the Shastras are 100% true. Because we are in the association of Matajis, devotee ladies, Matajis, who are practicing, who are chanting, तो हमें लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है? But if we go to the gross society, the gross materialistic society, where ladies are those loose characters, they are going to clubs, and most of them are like that only, right? ज्यादातर तो वही population है, हम जैसे तो बहुत कम है. तो जब उस population, हम तो ज्यादा mingle होते नहीं, हमें पता नहीं है what's happening outside. But if we go really there, अगर ऐसा, yes, and the population is like that, which we can see in the paper, newspaper. If we see the news, if we can see the newspaper, then we can come to know, okay, this all is happening in the society, right? So अगर ये शालिनी माता जी, अगर ये श्रीमद् भागवतम में आया है ये श्लोक, that means that is the biggest authority. उससे बड़ा authority श्रीमद् भागवतम से बड़ा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता. अगर श्रीमद् भागवतम में चर्चा है, श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में बताया गया है, 8th कैंटो में बताया गया है, that means it is full proof praman. But we have to take it like this. Okay. It's not for our to demoralize us or to discourage us. It's not like that. हमें उसको negative sense में नहीं लेना है. हमें उसको as a reality accept करना चाहिए कि okay, this is the truth. ये सच्चाई है. And we have to take it in a positive sense.
भाई ये कुछ स्वभाव मेरे अंदर भी हो सकता है, एज अ स्त्री कुछ स्वभाव शायद मेरे अंदर भी दिखाई दे सकता है, राइट? हो सकता है मेरे अंदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वुमेन, आई एम ऑल्सो लेडी. सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट नेचर, एंड इट्स नॉट रॉन्ग. वी हैव टू वर्क ऑन दैट नेचर एंड वी हैव टू रेक्टिफाई इट, दैट्स ऑल. किसी चीज को गलत बता देना उससे हमको दुखी हो जाए, दुखी होने से अच्छा है कि हम उसको उसके ऊपर काम करें और उसको रेक्टिफाई करें. ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर. ओके, बस राधा गोकुलानंद माता जी, you want to say any something? No, see, it was very nice talk. The children were with me. They were really very interested in the topic, particularly Krishnangi. She was completely loving the topic until she had to leave for another, somewhere. But it was very beautiful to know. Yeah, the essence was, I don't want to just read from the Shastras just to tell that, okay, see how we are, what is our position. It's not like that. We have to know the truth, na? What is there in the Shastras. And this is in Srimad Bhagavatam, this is in Mahabharata. It's written in that. So we should know it. कि भाई ऐसा है. We should work on that. That's all. Yes. इट्स नॉट कि Yes. अरे हमें पुरुषों से कम बताया गया है. पुरुषों के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, लस्टी मैन के लिए भी बहुत सारी चीजें, कामुक लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई गई है. ठीक है. सो ऑल द रेमेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज बैड थिंग इज टू प्रैक्टिस एंड चैंट द होली नेम. दैट्स द थिंग. If you are, Prabhupada says one thing, if Matajis are practicing Krishna consciousness, she is most intelligent. This is what Prabhupada says. That if Matajis are practicing Krishna consciousness, reading Srimad Bhagavatam and chanting the holy name, she is most intelligent. She is not less intelligent. Okay. So this is Mataji, the. can I ask something? Yes, Madam. You mentioned Krishna said that in Bhagavad Gita that following your own dharma, even if imperfectly, that's conducive for that will help us attain the mode of goodness. Yes, yes. So is that dharma we are talking about? I mean, occupationally, duty. Yes, the prescribed duties. Dharma means the dharmam tu shakshat bhagavad pranitam. Dharma means that which is enjoined in the Shastras, that which is given in the Shastras. It's not man-made. It's not made by us. It's made by the Lord. That is dharma. Dharmam tu shakshat bhagavad pranitam. Bhagavad pranitam means it's given by the Lord. So that dharma I'm talking about. That dharma means one's prescribed duties. Right? There are two types of dharma: the varnashram dharma and the bhagavad dharma. Okay, so varnashram dharma means based on our bodily, whatever body we have acquired, based on that varnashram dharma, we have to do the prescribed duties. Like as a lady, we have a different prescribed duty. As a mother, we have to do our prescribed duties as a mother, as a wife, as a daughter-in-law, as others prescribed duties. And Bhagavad dharma is same, irrespective of whatever body we have acquired, be it man or a woman. Whatever we have acquired, Bhagavad dharma is the same. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Patsenam, Dashyam, Sakyam, Atma Nivedam. These all 9 limbs of devotion service are same for all living entities, irrespective of whatever body they have acquired. But this Varnashram Dharma, this is different for different living entities, based on the body they have acquired, based on the past desire and karma. Because of that, they have acquired a particular body, and based on that, they have to do a prescribed duty, which is a medicine for them actually. This is what Prabhupada says, that based on the psychophysical nature of that person, the prescribed duty has been allotted so that the Raju and Tamo in his heart be removed and he gets situated in the mode of goodness. Accordingly, the dharma is prescribed for that particular person. Okay, so we have to, Krishna is rigidly saying that we have to follow that dharma only and not follow others' dharma. That can be dangerous. And that's what we see in the present day society, that if we follow, most of the Mataris are following different dharma that is not prescribed to them, and it's dangerous, coming out to be dangerous, right? It's affecting their consciousness, affecting their chastity, and affecting their health physically also, mentally also. Everything is getting affected, right? So this is what Krishna says in Bhagavad Gita. Okay, thank you very much.
Hare Krishna. Pranam. Thank you for joining. Okay, so we'll come to Krishna the. Mataji. Yes, Madhuri. Pranam, Hare pranam. Krishna. Pranam. Yes, Pranam. Okay. Okay, thank you so much. Hare Krishna. वांछा कल्पत्र वैश्य कृपा सिंधु भई विचपत्तनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा शिल्पा माधुरी। Hare Krishna Mataji. Thank you for आजकल the तो wonderful. वीडियो ऑफ रखते हैं, पता ही नहीं चलता आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, पता ही नहीं चलता, वीडियो ऑफ है ना। पीछे से देखते हैं, पीछे से अटेंड करते लगता है, चुप के अटेंड करते चुप नहीं के। Mataji, from the starting the class. Okay. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. We'll meet on Friday. Mataji, another Mataji called Bhumika, she's got her hand raised. Yes, Bhumika Madhuri. Yes, Madhuri. Hare Krishna Mataji. Yes, Pranam Madhuri. Yes. Actually, I have one question. मतलब I मतलब सब कुछ तो समझ में आया, but just one thing जो है ना पूरा एकदम ऊपर से, like ब्रह्मा जी who marrying, मतलब वो अपनी own daughter से, मतलब ये story मतलब मैंने बहुत बार सुनी है, but मेरी मम्मी ने बोला कि वो ब्रह्मा पुत्री नहीं है, वो ब्रह्मपुत्री है. They two are different personality. So please can you share what is this? I'm totally confused. Yes, yes. Actually, this incident come in. ये श्रीमद् भागवतम में ही ये घटना आती है, जहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, और जब ब्रह्मा जी ने ऐसे सृष्टि की रचना करते करते एक कन्या की रचना की, एक कन्या को बनाया, तो जब वो एक कन्या को बनाए तो उसके रूप इतना सुंदर था कि ब्रह्मा जी जो उन्होंने उस कन्या को बनाया वही उससे आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, पीछे पीछे दौड़ने लगे, मतलब टू हैव रिलेशनशिप विद हर, मतलब ही वांट्स टू गेट यूनियन विद हर, ठीक है, ब्रह्मा जी स्वयं, ठीक है। अभी इस घटना उसके बाद सब लोग कहे क्या कर रहे हैं आप, व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन ब्रह्मा इमीडिएटली रियलाइज एंड रिपेंटेड, उनको रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, एंड ही रिपेंटेड, एंड देन आफ्टर दैट इट सेड इन श्रीमद् भागवतम कि उन्होंने वो शरीर त्याग दिया, उन्होंने वो शरीर ही त्याग दिया अपना, क्योंकि वो कंटामिनेट हो गया था और उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा का शरीर छोड़ दिया, ऐसा श्रीमद् भागवतम में, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि जब बड़े पर्सनालिटीज जैसे ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, ये लोग गलती करते हैं, ठीक है, तो उनकी गलती गलती होती है, गलती तो है ही ना, अपनी बेटी के पीछे, एक पिता होकर अपनी बेटी के पीछे भागना, उसके साथ संबंध करने के लिए भागना एक गलती है, इट्स अ मिस्टेक, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा गलती कर रहे हैं तो यार ब्रह्मा तो गलती कर रहे हैं तो वो गलती नहीं होगी, नो इट्स नॉट, गलती गलती ही है। पर दो चीजें हमें सीखना है इससे, इस इंसिडेंट से दो चीज सीखना है। पहला कि अगर ब्रह्मा गलती कर सकते हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ब्रह्मा गलती कर सकते हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, ये चीज हमें सीखना चाहिए कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बताया कि इवन माँ बहनों के साथ भी बहुत इंटीमेट होके बात नहीं करना चाहिए, बहुत ऐसे बहुत ज्यादा, क्योंकि सी अल्टीमेटली तो अपोजिट ही है ना, अपोजिट जेंडर है, तो माँ बहनों के साथ भी थोड़ा, भाई है, बड़े भाई है, पिता है, ठीक है, उनके सामने भी, जैसे लड़कियां आजकल बहुत शॉर्ट्स और कपड़े पहनते हैं और ऐसे सब, पर अगर बड़े भाई हैं, पिता हैं, तो ठीक से डिसेंट कपड़े पहनना चाहिए घर में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि सी दे शास्त्रस, व्हाट शास्त्रस डू, दे टीच अस लेसन्स, वो हमें शिक्षा देते हैं कि भाई ऐसा घटना घट सकती है, आपके साथ, ब्रह्मा के साथ घट सकती है तो हमारे साथ नहीं घट सकती, हमारे साथ भी हो सकती है, राइट। सेकंड थिंग, तो फर्स्ट लेसन वी गेट दिस कि अगर ब्रह्मा अपनी बेटी से अट्रैक्ट होकर भाग सकते हैं तो साधारण मनुष्य को तो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, माँ बहनों के साथ बहुत फिजिकल ऐसे इंटीमेसी करके ऐसे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। सेकंड इज, ब्रह्मा जी ने जब ऐसा हुआ तो तुरंत उन्होंने रिपेंट किया, अरे मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने गलती करी, मुझे सुधरना चाहिए, तब रियलाइज किया, एंड ही रिपेंटेड एंड ही प्रेड टू द लॉर्ड, ठीक है। तो ठीक है, इफ एक्सीडेंटली कोई मिस्टेक हुआ है तो हमेशा किसी ने पॉइंट किया कि अरे आपने गलती करी, बोले है मैंने थोड़ी गलती करी थी, यू शुड एक्सेप्ट द मिस्टेक। जैसे ब्रह्मा जी ने, लॉर्ड शिवा ने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने मिस्टेक करा, एंड रिपेंटेड, और उन्होंने पश्चाताप किया कि भाई मैंने गलती करी, भगवान से प्रार्थना की मुझे माफ कर दीजिए, और ऐसा नहीं कि बाहरी रूप से दिखाने के लिए,
बाहरी रूप से दिखाने के लिए बोल रहे कि मुझे माफ कर दीजिए, नहीं, अंदर से हृदय से एक्सेप्ट किया कि मैंने गलती करी, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसीलिए हम देखते कि ब्रह्मा जी वो गलती दोबारा कभी नहीं करते। ओके। तो गलती हुई है तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि पहली बात कि हमें सतर्क रहना चाहिए, और दूसरी बात कि गलती हुई है तो हमें इसे हृदय से रिपेंट करना चाहिए, हृदय से उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से माफी मांगनी चाहिए, और उसके बाद वो गलती नहीं करनी चाहिए। Okay, so these are the two lessons that we learn from this incident. Okay, thank you so very much, Mataji. Thank you. Okay, yes, Madhavi. Yes. मतलब जी मेरा इस एक पॉइंट के बारे में कुछ मानना है, वो आप मुझे वैलिडेट कर सकते हैं क्या मैं सही सोचती हूँ या गलत? भक्ति प्रैक्टिस करने से और एसोसिएशन विद डिवोटीज से जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है स्वभाव में, नेचर में। तो क्वेश्चन मेरा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के बारे में है। सो आजकल जो वर्ल्ड है, क्या हम इसमें ऑनलाइन एसोसिएशन मेनली, मतलब 90% ऑनलाइन एसोसिएशन हो तो क्या चल सकता है? क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ इट्स पेरिफेरी ऑफ यूके, और यहाँ बहुत कम डिवोटीज हैं, तो ऐसा मैं जानना चाह रही हूँ। Association basically, तो what is the meaning of association? What is the meaning of association? Association doesn't mean that you sit beside that person and then just you eat with him, you sleep with him. This is not association. Association means that you hear from that person or you discuss shastras from that person and you are imbibing some क्या बोलते हैं क्वालिटीज, सब कुछ आप कुछ उससे सीख रहे हो और वो चीज आप अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहे हो. यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट पर्सन, right? And that means association. That means that you are that there is a adan pradan. There is adan pradan with that person. You are just sharing your thoughts. You are hearing from that person. That is called association with that. You are learning from that person. You are trying to inculcate in your life. That is association with that person. Yes, it can cause change in your life, even online also. If you are like really attentive, you are really associating with that person online also, it can bring change in your life. It depends upon you how much seriously you are taking that knowledge from that person, right? Just as Srila Prabhupada, did we ever see Srila Prabhupada? Did we ever see Srila Prabhupada? No, na? We never saw Srila Prabhupada personally, right? But still we are associating with Srila Prabhupada through his books, through hearing. That is online only, na? That is online. It's right, online only, na? You're online only associating with Srila Prabhupada because Srila Prabhupada is not physically present, right? So, yeah, definitely on-site is more effective. Offline is association is more effective, but it depends upon you how you are taking. Like few devotees, few senior, like Guru Maharaj. My Guru Maharaj is there. I hardly once in a year I met Guru Maharaj, but still I'm associating with Guru Maharaj through his lectures, and that is online only, na? Right? Most of the sannyasis we associate online only. Radhanath Maharaj, Guru Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj, and many senior sannyasis we associate online only. But still, we are feeling their association. We are feeling some change in our life because of associating with them. So it depends upon you how sincerely, how seriously you are associating with that person. No matter it's personal or it's online. Okay, getting. So this depends upon you what you are taking, how much serious you are in association. Thank you, Masi. That's very helpful and reassuring. One last question. Sorry, I understand that there are limitations to time. Are there any kind of alerts? Are there any alerts that women can observe if there is? Yes, there are so many alerts that a woman should observe. Yeah, there are many alerts that a woman should observe. Actually, there's a list of alerts that a woman should always follow. The first and the foremost alert for a woman is to keep a distance from the opposite gender. This is the first and the foremost and the most important alert for a woman, is to keep a distance and not be loose in front of the opposite gender. Always be
always have a dignified. Okay, so this is the thing that we should always have a we should always have boundaries when we talk to the opposite gender. Yes, yes, Madhuri. So the first and the foremost alert is to keep a distance from the opposite gender. Don't unnecessarily talk with them. Just have a straightforward talk with some. If you have any work with them, just talk with that matter. If you have some matter to discuss, then only talk. Avoid irrelevant talks and keep a distance. The other person should also have that feeling that, okay, Mataji is keeping a little distance from me, right? And second thing is, don't laugh in front of the opposite gender. This is very strictly prohibited in the Shastras. Don't laugh. You can smile, but don't smile face to face. You can have a smile, but don't laugh loudly in front of the opposite gender. It creates a very bad impression in public, right? Because generally prostitutes do that. They laugh loudly and to allure the opposite gender. So we should have that etiquette that we should first of all have strict boundaries from the opposite gender and try to lessen least mingle with them for any matter. कम से कम चांस ऐसा हो कि हमें कम से कम उनके साथ डीलिंग करनी पड़े, सेवा में भी, प्रीचिंग में भी, और whatever you we do, because this is the biggest danger that we can have in this material world is association with opposite gender. Anytime we can fall, कभी भी हमारा पतन हो सकता है. Anytime we can get attracted, and then our whole mind, whole consciousness will get polluted. Ajamil case, see Ajamil case, see Shawbari Muni's case. Anything can happen in any time, right? So my Guru Maharaj also says the same thing, that we should, the first and the foremost thing in Varnashram is to keep a distance between man and woman, and that we strictly followed in Nandaram farm community. We were there for 5.5 years there. We strictly follow this principle. Guru Maharaj was very particular regarding this, that the Matajis will not associate with Prabhujis for any matter, not even for seva. In festivals also, we do service with Matajis only. No mingling with Prabhujis. Okay, so this is the alerts, and there are so many alerts actually, but this is the most important alert that a Mataji should have. And regarding that, your question of changing the Swabhavana you were asking, na? One point I want to say to you, that see, Swabhava can change overnight also. Swabhava can change within few days also. If it depends upon the devotee, how powerful the devotee is in Krishna consciousness. It depends upon that. Then your Swabhava can change. See Mrigari, Narad Muni changed the Swabhava of so many demons. Right? Narad Muni is such a powerful devotee. He is a pure devotee of the Lord. He changed the Swabhava of Mrigari. He changed the Swabhava of Valmiki. He changed the Swabhava of so many demonic people. How? Because he is a pure devotee of the Lord. So if it depends upon your association with whom. If you are associating with the powerful, staunch, practicing Krishna consciousness devotees, then definitely your Swabhava will change within few months. Depending upon how sincerely and seriously you are associating with that person. Right? So depends upon your association also, whom you are associating with. I generally, what I do, Mataji, in YouTube there are hundreds and thousands of lectures. पूरा जैसे बाढ़ आई है अभी तो lectures YouTube. The thousands and thousands of lectures are there. But I don't hear so many. I generally choose. First I prefer Srila Prabhupada, then Guru Maharaj,
These two I listen must. I always listen. Srila Prabhupada and Guru Maharaj. And then I prefer to hear sannyasi's lecture more. I'm not saying that others are not good devotees. Others are good devotees. There are many good devotees in ISKCON. No matter, there There's are time devotees. limitation as well. There is Yes, time huh? limitation as well, Mataji. But time limitation. How many Time lectures we can limitation. hear in one day? Yes. How many we can hear? Prabhupada and Guru Maharaj is almost done actually. But still I hear few sannyasis more like Radhanath Maharaj and you are there. But I don't hear much. Because we have to read also, na? We have to chant also. We have to read also. So how much? And we have to do services also. There are so many services also. So how much we can do? So that's what I do. But there are good devotees. Brahmacharis are also good devotees. But I'm saying my limitations that I do this much. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Radhi. Hare Krishna. Hope your doubts are cleared. No, thank you, Mataji. It was very helpful. Vanchakalpatra Vaishakripa Sindhudaiv Jagattanam Pavane Vaishnavidyo Namo. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.